नमस्ते दोस्तों। टीम न्यूज़ आवर भारत स्पीक्स में मैं आपका होस्ट अमित भाटिया और मेरे साथी विवेक सिंह जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं राजेंद्र रैना जी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनमोल चंदन जी हैं। सर, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे काफ़ी गंभीर है, काफ़ी दिनों से चल भी रहा है और आई थिंक इंटरलिंक्ड है। 2-3 मुद्दे हैं उसमें। नुपुर शर्मा जी पर जिस तरह से टारगेट किया गया है, एक वो वाला मुद्दा है जहाँ पे उनको थ्रेट्स आ रही हैं और ये थ्रेट्स अनरियल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि उदयपुर में कन्हैयालाल जी का मुद्दा हो, उनका किस तरह से धमकियां दे के एक स्लॉटरिंग की गई है और फिर बाद में आता है कि अमरावती का केस भी आता है जिसमें उमेश कोल्हे जी वहाँ के रहने वाले, इसमें आई थिंक कुछ बातें कोर्ट के हिसाब से भी कही गई हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैं राजेंद्र जी से के पास पहले जाता हूँ आई थिंक। तो राजेंद्र सर, अगर आप एक अपना ओवरऑल व्यू बताएं कि ये मुद्दा किस तरह से हुआ था और क्या ये इतना तूल पकड़ना चाहिए था टू बिगिन विद, जो हर बात को नुपुर शर्मा के ऊपर छोड़ दिया गया है या उनके ऊपर सारा फोकस आ गया है और आज की डेट में हम देख रहे हैं इवन तालिबान तक ने उनको थ्रेटन किया है। जी, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। थैंक यू। नमस्कार सब दोस्तों को। आई थिंक 2-3 पॉइंट्स में जो क्लियरली रखना चाहूंगा इसमें, दैट व्हाटएवर हैपेंड इन द टीवी डिबेट, I think it started a few days after the debate. So that is one point to be noted, and it started with the dog whistling by Zubair Ahmed, because he put only one portion of the debate. जिस context में बोला गया था, I'm not justifying the what she is saying, that is for the court to take cognizance of, but जो basic context था वो miss कर दिया. So that means there was some mischief behind that small video clip that was put by Zubair. And the other part of that video clip was that he tagged it with the ambassador of Qatar, which he deleted later on. So उसने जो सारी compilation की, and the way he ran amok with this, and then the rest of the political parties joined in, nobody talked about what all she had heard and talked about कि जो भी ज्ञानवापी मंदिर के कंटेक्स्ट में कहा गया, शिवलिंग में कहा गया, and which enraged her. Once again, not justifying what she said, but वो कंटेक्स्ट नहीं डाला गया इस वीडियो में भी और कहीं पे भी. And then in came the political parties, and the worst part was when you have somebody who is in the assembly, somebody who is in the parliament, he talks something on a matter which is sub judice, which is in police FIRs have been filed. They talk about something which is outside of Indian constitution. They talk about Sir Tan Se Juda. Her effigy was hung from a rope in Karnataka. So that is how the outrage started, and it then spread like a jungle fire across. So that is when the entire thing went absolutely disproportionate, and everybody was on the defensive. And Nupur had no way, but then she went ahead and apologized also. Openly she apologized. She put the video in circulation that, okay, if I offended someone, not getting into what she said, but one thing for sure, she did apologize. And there were multiple FIRs. So the case should have rested there with the courts to decide. They could have asked for anything. But I think what went wrong in this was when that
Sharia type rampage started ki sar tan se juda, and it went in a peaceful place, as I might call it, like Kashmir, जहाँ पे पिछले 3 साल से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, वहां पे भी सर तन से जुदा की जो है ladies came out in hordes there, and it went right down south. See, heartland में पूरा चला, TV debates में पूरा चला ये, and nobody rested his case that okay, we'll go by what police and judiciary decide. They defied that. They said इससे नहीं चलेगा, and as late as 2 days back, Mr. Asaduddin Owaisi comes back and says, no, isko arrest karo. He still does not have trust and faith in the Indian police system and judiciary. So that is what is giving a disproportionate rage to this case, and everybody seems to be on the defensive. So that is where from it started. And then coming to what happened in the court, I'll quickly go through that. We have the advocate here, learned advocate here, so he would give us the nonce of the whole thing. But I think it was clear case of victim blaming and victim shaming. Number two, I'll say that what happened that she had gone there for bundling of the FIRs, which is her legal right. Has it been done before? It has been done before, and I am reminded of M.F. Hussain. He got it bundled in the court of law. So when she was denied this, first of all, it was a legal harassment. People say कि उसको threat है life का. No, I say before that, it is a legal right, and if you deny her this legal right, which has been granted to so many people, it's a legal harassment. For a lady to run around across the country to Calcutta, Hyderabad, Mumbai, Delhi, everywhere. Number two is that person or a lady under life threat of rape and a bounty on her head is not given this legal recourse is one part of it. The other part quickly I come to is the observations which did not find mention in the final 2-line order. But what has that done is that has gone into the court of public opinion. And that is what will now start leveraging the entire discourse. जो अभी तक 2002 के riots के साथ everything was linked with that. Now it would be linked with Nupur Sharma because it has been tacitly underwritten by Supreme Court of India. And the worst part is that Supreme Court then says that this will not influence the lower courts. But at the same time, they blamed media as if media discourse will influence, but Supreme Court discourse will not influence this. So the other point, small thing, is that they had points to pass against police. Now, this was not the case when they should have spoken against police. They could have called police separately. But why, via Nupur Sharma, they started talking about police? Number two is that I have seen for the first time in as simple and a straightforward petition before the Supreme Court, their remit went into the character assassination of the lady. They said she is arrogant. Now, she could not have gone to any high court because she is under the jurisdiction of various high courts when various police stations are involved. So the only place for her was the Supreme Court. And Supreme Court said that you are so arrogant that you have the audacity to come to Supreme Court. Now, this is bizarre. They didn't say this to Arnab Goswami. They didn't tell this to M.F. Hussain back then. And the worst part was when they told her, कि सत्ता का नशा है तुम्हें. So I have never heard this bizarre thing that they are talking in terms of abstract philosophy when they are guided only by law. They are talking of somebody's, how she is thinking, how she is behaving. आज तक हमने ऐसी जजमेंट नहीं देखी है. I am sure अनमोल जी इस पे काफी light cast करेंगे. So I think they have judged media, police, the person concerned. So the ramifications of this, let me say with some responsibility, loose-tongued comments, which they didn't have, then the capacity to put it on record. They should have. If they felt so strongly, they should have put it on the order. But they said what was supposed to be said in the order, but loosely jitna फेंक दिया उन्होंने, this will spoil the discourse in future. That is my worry. And at such grave situation, at such grave times, serious times,
I think they have gone out of their limit. So that's what I would like to say. Thank you. जी। विवेक भाई, मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले एक बार अनमोल सर के पास चलते हैं, इफ वी कैन टेक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि हमने उनका पॉइंट भी सुना था हमारे स्पेस में, और उन्होंने एक काफी कंटेक्स्ट में रखा था इसको टेक्निकली। सो सर, इफ यू कुड, अनमोल सर, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। जी जी, मैं जी सर। नहीं, रैना सर ने काफी ब्यूटीफुली हमें लाइक एक आउटसेट में ड्रॉ कर दिया हाउ दीज सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव स्टार्टेड फैक्चुअली, not his opinion, but whatever he has said is stricto sensu what had exactly had happened. जो सिनेरियो और सिचुएशन था, that is linkage quite evidently from ज्ञान वापी के केस से, and then series of debates, and then all these speeches, and rather than we saying all these things, thing is it's problem, और आप लोगों ने देखा होगा before coming to technicalities and every other thing, uh, very few of the learned, I mean, like by religion, Islamic people like Muhammad Arif ka statement dekha hoga governor. So he categorically said the problem is, and we all are shying away to say, till the time we are not going to address the issue stricto sensu to the root of it, that is the preaching itself, inherent preaching. That is a barbaric preaching that won't allow in any particular civilized society, nation, to have a healthy atmosphere for any kind of human race development, socially, culturally, scientifically, medically. They have nothing to offer to a civilized society than all these filthy practices which some man-made person has written and all those things. Now, coming back to what exactly had happened, and the scenario got outburst over, I mean, like, that was a lackadaisical approach by the honorable judges, considering how high post they are holding. And I'm sure they are quite much senior to that effect to be aware of that how post COVID or during COVID, the live streaming and the links being provided to the media houses. Earlier, also it had happened because the journalist had access, primarily the print media and few of the other legal journalists, the access to the courtroom. And the scenario during Twitter, Facebook, and this COVID era has make it all the more vulnerable. Rather, I would say transparent, because there is nothing to shy away what had, I mean, like, generally is happening in court, because very few things come on record. If you go by actual sense, so if you go by the order, what had happened, so order is very simple. That day, nothing as such judgment is on record being pronounced, quote unquote, the whatever, I mean, like the honorable judges has transpired during the hearing. Because the moot issue before the honorable judges was very simple, though it was in a form of writ petition. That is a technical thing, that what is the difference between a writ or a transfer petition. Though in that writ petition, only thing what was prayed was to transfer all the cases to one particular jurisdiction, because the way it had happened in Aranav Goswami case, and the same Supreme Court, different honorable judges, has categorically, whatever, I mean, like the merit of the matter is, whether Arnav Goswami or here in this case, Ms. Nupur Sharma, whatever she said during TV debate is a matter of trial. And constitutional court, vis-a-vis Supreme Court or High Court, are not basically vested with such kind of duty to decide the matter, since क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं था वहां पे, क्योंकि कोई ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं था। और जो कंप्लेनेंट रहेगा या जिसने फाइल की है या जिस पुलिस ने रजिस्टर किया है, उसको अपना केस परसू करना होगा कि ये चीज हुआ या क्यों हुआ। Snippets में you can't take and judge कि you can edit those things and take selectively that only portion what has been said by Nupur Sharma, rather than
properly corroborating in what all circumstances and how she reacted and why. So, that was not, and to that extent, it was going beyond jurisdiction. But in order sheet, nothing as such has come. Order sheet is very simple. That day also we were discussing that considering the bench's observation, oral observation, the learned senior counsel then that time representing Nupur Sharma, Mr. Maninder Singh, quite senior and eminent person. So he rightly chosen to withdraw those petition, seeking liberty of the court to avail alternate remedies. So, in that view, that writ petition got dismissed as withdrawn. That is the only order which has been officially on record being passed. No judgment, no observation is on record. Problem occurred, technically, because of live streaming and every other thing. Number of journalists have access of these live feeding and links and all, and they run it as a running commentary. There the judges were probably, and not probably because this is very categorical, that since those matters were not there, they must have observed through media houses only or through social media, and it was their view which was not before them, that whether she was right, she was wrong, and all those incidents, nor even the Jaipur one, nor even the Maharashtra one, and that was not even sub judice there, the Tailor killing and the terrorist activity of those two, the extremist terrorists, whatever you can say. So that was also not being there, that how it happened and what is all resultant into and all those things. With or without statement of Nupur Sharma also, we have seen every time here and there Godhra carnage or any extremist activities or any violent activities primarily happening. You must have observed that post Jumma or Friday ki namaz ke baad, every time here and there such kind of activities been taking place. The only thing is this matter got highlighted. Why? Because of live streaming and the way it got reported as if Supreme Court of India has passed a verdict, which is not the case, because there was not even verdict to this effect that whether Nupur Sharma is responsible or not. It was personal view of the judge, which should not and out not have to be transpired during the hearing of a matter, where it was only the matter which is in dispute was whether all the several, 32 or something writ petitions being clubbed together or not. That's all. FIRs. So that is the only matter was there and then only. So to that effect, that is the case. Thanks. Yeah. So, I mean, if we look at the whole case, I think it wasn't that big कि जितना उस हिसाब से बना दिया गया था, whether we take it from that telecasted interview नूपुर का और जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, या फिर उसके बाद even judgment का, because there is a lot of I mean, it's not judgment, but as you said, it was an opinion, and then the petition was not even made. अमित विवेक जी, भाई, एक सॉरी, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करूंगा, दो थोड़ा श्योर ऑफ द कफ जा रहा हूँ एंड श्योर थोड़ा डिरेल हो रहा हूँ. बट सी, द होल सारा हॉस्टिलिटी ग्लोबल आपके अगेंस्ट रहेगा ही. एंड द वे व्हाई, यू सी, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, you can't rely, and no country is going to, without their self benefit, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है. ओवर एंड अबव द वे कोरोना में आपने सारे जितने ड्रग कार्टेल और फार्मा इंडस्ट्री को यू हैव गिवन अ कोल्ड शोल्डर, राइटली, बिकॉज द वे दे वर desperate to your what you say, the crisis, because considering the big population. A, आपने जैसे बैटरी ऑफ कार्स यू हैव स्टार्टेड विथ, जिसमें डीजल और पेट्रोल नहीं यूज हो, उससे गल्फ कंट्रीज को थोड़ा थ्रेट होना. बी, जैसे वीट प्रोडक्शंस को लेके आपने तुरंत से बाहर पे रोक किया था. जैसे आपने यूक्रेन वाले क्राइसिस में यू नेवर सपोर्टेड व्हाट द सो कॉल्ड माइटीज और विश दैट टाइम कि उनका झगड़े में आप पड़े. फिर और भी इस तरह के सेवरल इश्यूज हैं जिससे इस गवर्नमेंट से ग्लोबली इन लोगों को परेशानी हो रही है. एंड दैट वाज द रिपरकशन कि ये लोग कंसोलिडेट होके नुपुर शर्मा के इंसिडेंट को हाईलाइट किए थे ग्लोबली.
so that to tarnish some reputation of India. And that is how politically BJP is, I mean like acted this government quite well, that वहाँ पे उन्होंने statement एक दिवा दिया था, and that's and then only matter should have ended. But hostility global है, वो उनका एक ecosystem work करता है, उनकी agencies है, they have several other things which they are into, which they can, I mean like dwell for every other thing. तो ये कोई छोटा मोटा nexus नहीं है which is operating. It's a global nexus which is creating a chaos and situation. That's how ये वाले स्टेटमेंट को मीडिया ने उस तरह से परोसा as if सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है. And media, it is not that they are shying away and they are not, I mean like aware of. They have a legal team, they are aware कि क्या कब बोला जाता है. You must have seen the reportings of journalists. उन्होंने इस ढंग से लेमेंस के लिए प्रोड्यूस किया है उस चीज को as if that सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला वर्डिक्ट दे दिया है to create hostility. Thanks. Exactly. विवेक भाई, आपके पास आता हूँ. Yeah. So, Anmol sir and Rajinder sir, I have a question actually. Without जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ अभी हाल ही में, विदाउट नुपुर शर्मा एंड विदाउट ट्रायल एंड एवरीथिंग, एक जजमेंट पास कर दिया गया वर्बली, जिसमें कहा गया कि आपको माफी मांगनी है वगैरह, मतलब जो बोला गया, मतलब ठीक है. तो क्या वो एक सही तरीका था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मुझे जो एज अ पब्लिक से की तरफ से अगर मैं कहूँ या मैं अपनी तरफ से समझ से कहूँ, तो ये शायद सही तरीका नहीं था. एक बार उनका ट्रायल होना चाहिए था, उनकी सारी चीजें उनकी तरफ से सुननी चाहिए थी, फिर शायद कोई एक जजमेंट पे आता तो शायद सही रहता. आपकी तरफ से कोई पॉइंट हो अनमोल सर और राजेंद्र सर, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा बताइए. आई थिंक राजेंद्र सर के पास चल सकते हैं, या अनमोल सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? I'm so sorry विवेक जी and अमित जी and राजेंद्र सर, वो एक कॉल आ रहा था सॉरी कोर्ट से, तो मैंने वो उठा रहा था. I'm so sorry विवेक जी, could you come again? I'm so sorry, extremely sorry for that thing. Yeah, no issues. Anmol sir, my question is, without having any kind of trial and without any having inputs from the Nupur Sharma side, एक जजमेंट पास कर दिया जाता है, एक ये कहा जाता है कि आपको माफी मांगनी है टीवी पे आकर के, जबकि उन्होंने एक बार वीडियो डाली थी अपनी, जैसा कि राजेंद्र सर ने बताया कि माफी मांगी हुई है, ठीक है, और सब कुछ उन्हीं की तरफ से हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है जो भी देश में हो रहा है. तो क्या ये सही तरीका था सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट देना कि आपकी वजह से हो रहा है और आपकी तरफ से हो रहा है, विदाउट लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ नुपुर शर्मा पर्सनली एंड विदाउट लुकिंग इनटू द नुपुर शर्मा's ट्रायल ईच एंड एवरीथिंग? एक बार भी ट्रायल ऐसा कोई खास हुआ नहीं, मैंने नहीं देखा कोई ट्रायल हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का, और इस तरीके से, मतलब मजिस्ट्रेट ट्रायल जो कहते हैं हम इस चीज को. तो क्या ये सही तरीका था जजमेंट देना इस तरीके से जज का? विवेक जी, मैं अभी वही बोल रहा था. पहला चीज, सॉरी मतलब थोड़ा सा फिर से समझाऊं, जजमेंट नहीं पास हुआ है, कोई ऑर्डर भी नहीं पास हुआ है. ये दोनों टेक्निकल वर्ड्स हैं कि जब तक वो रिटन फॉर्म में ऑब्जर्वेशन आएगा नहीं विथ कंक्लूजन, तो यू कांट से इट्स अ जजमेंट. यही मैं बोल रहा हूँ, नरेशन ये दिया गया है बाय अ मीडिया क्लेवरली टू इग्नाइट द इशू. कॉज सी, राइटली रॉन्गली, मीडिया हो, वकील हो, डॉक्टर्स हो, हम लोग का पूरा बिजनेस ही चलता है क्राइसिस पे. आई मीन लाइक इट्स अ फैक्ट. सो उसको हाइप क्रिएट किया गया, लेमेन को कान में बोल बोल के, और जिस तरह से न्यूज दिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला. वो ओरल कोर्ट में ना, आप जब आएंगे कभी या कभी देखेंगे कभी कोई हियरिंग्स, तो बहुत सारी चीजें ट्रांसपायर होती हैं, बात हो रही है, आर्गुमेंट्स हो रहा है उस चीज में. कॉज सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो बहुत सारी केसेस में बहुत सारे व्यू लेते हैं, बोलते हैं बस अक्रॉस द बोर्ड, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं. तो हम लोग के ऑब्जर्वेशन को भी कोई लिख दे कि भाई अमित जी ने ये बोल दिया, विवेक जी ने ये बोल दिया, फलाना जी ने ये कर दिया, जब तक वो रिकॉर्ड पे ना हो. वो ऑर्डर क्या रिकॉर्ड हुआ वो मैंने आपको जस्ट बताया, अमित जी को भेज दूंगा, वो शेयर कर देंगे. वो बस इतना ही था कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी के व्यू में वो विड्रॉ कर रहे हैं पिटीशन, बस इतना ही ऑर्डर हुआ. यही आना भी चाहिए था यदि सेंसिबल मीडिया रहती. हाँ, जज का जो व्यू पॉइंट था एंड ऑल दोस थिंग्स, आई बेग टू डिफर दैट वो उनका पर्सनल व्यू पॉइंट था जिसका मैटर से कोई संबंध नहीं है, और वो जजमेंट नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज नीदर अ जजमेंट नॉर अ ट्रायल. हाँ, बट थोड़ा कॉशियस रहना था कि वो अप्रीहेंड नहीं कर पाए होंगे कि इस सिचुएशन में
इतना इग्नाइट हो जाएगा और उनको इस ढंग से कोट कर दिया जाएगा। इट शुड हैव बीन प्रोबेबली कि, और प्रोबेबली शायद कभी ना कभी वो आ ही जाएगा फिर से, कि वो कभी ना कभी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा कि मीडिया को इस तरह से इसको हाइप नहीं करना था। कोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको कॉशियसली जो लीगल जर्नलिस्ट होते हैं उनको संभल के देना होगा। बट ठीक है, वो भी नोइंग कि जिस तरह का सेंसिटिव इशू है, इनको भी हाइप मिलेगा, टीआरपी बढ़ेगा। एंड यू हैव सीन काफी लोगों का ब्रेड एंड बटर इसी से चल रहा है। 2002 राइट इज अ क्लासिक एग्जांपल। ये गोधरा कांड कोई नहीं बोलता है, गुजरात राइट दे आई मीन लाइक कॉल्ड इट इनफेमसली। इट वाज अ पोस्ट गोधरा राइट या पोस्ट गोधरा कार्नेज आप बोल लीजिएगा। सो इट्स अ वे, दे आर वेरी आई मीन लाइक क्लेवर इनटू बिजनेस कि हाइप कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ टू कोड दोज वर्ड। सो बट फैक्ट अगेन आई वुड से, जज ने जो किया नहीं किया दैट इज अ कंप्लीट सेपरेट मैटर। अगेन आई हैव सेड कि ठीक है, वो व्यू पॉइंट है, हमारा भी व्यू पॉइंट है कि इट वाज नॉट द वे they out have been I mean like gone without having the matter before them। वो मैटर था ही नहीं कि नुपुर शर्मा सही है गलत है कैसे हुआ। वो तो सिर्फ इतना था कि एफआईआर्स को एक साथ एक जगह पे कर दीजिए। ट्रायल पे कोई नहीं बोल रहा था, अभी ट्रायल हुआ नहीं है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर। थैंक्स Anmol sir, thanks a lot on this clearing on this point of view, because मीडिया में कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम स्प्रेड अप करें और अपने लोगों को बताएं कि देखिए ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, जो कि जो उन्होंने वर्बली बोला और उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जो ऑर्डर पास हुए हैं और जो ऑर्डर दिए गए हैं वो मायने रखते हैं। दैट इज अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड विच वी हैव टू फॉलो, एवरीबडी हैज टू बी फॉलोड। सो आई मतलब मैंने ये जानबूझकर आपसे ये सवाल करा और थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा हाईलाइट चाह रहा था, तो दैट इज गुड टू गो। थैंक्स अ लॉट अनमोल सर। Rajinder sir, same point and same inputs I would like to have from your side. जी, उसके अलावा आई थिंक राजेंद्र सर मे बी वी कैन आल्सो टॉक अबाउट बिट अबाउट कन्हैयालाल जी और जो जी, उनका जी। I'll take 30 seconds on what Vivek ji is talking about. See, जो अभी अनमोल जी बोल रहे थे, see, जहां तक उनकी ऑब्जर्वेशन है तो उसको तो मैं मानता हूं कि कॉलिंग हर एरोगेंट, पुलिस का, मीडिया का, ये सबको मैं मान सकता हूं कि दीज आर अनरिटन ऑब्जर्वेशंस। बट आस्किंग फॉर एन apology on television looks more than an observation, because that looks like a directive to her. Calling her arrogant, fine, this is their observation. Saying police has been giving you a pass instead of arresting you is an observation. Saying that you seem to be overwhelmed with the power का hello है, I agree, all of these are observations. लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि when they said कि you should apologize on television, वो मुझे लगा कि that is more than an observation, because on rest of the things she has got to do nothing. But it looks that even since it's not been passed in the final order, she may not have to do anything on that apology part also. But that looked like more than an observation, जो बाकी सारे observation के domain में आते हैं. So that is my opinion on this. Now coming to जो केस हुआ है कन्हैयालाल जी का, आई थिंक इसमें दो तीन चीजें कहना चाहूंगा मैं, particularly from my personal experience in Kashmir, that it should be seen more than an act of murder, more than an act of jihad, for the simple reason that it is an Islamist jihad का ये part है. I'm using my words very carefully. I've chosen the word Islamist jihad का part है ये. तो इसमें दो तीन चीजें देखिए आप, कि पहले जो लिंक करना was absolutely out of place, proved by the fact that they got this 2611 number plate for their two-wheeler, which they purchased giving $5,000 और काफी पहले परचेज किया था, few years back. That means मैलाफाइडी तब से स्टार्ट हुआ था. नंबर 2 is that कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है. The idea is to perpetrate it, that they record one video before the event, another after the event, and one during the event. So तीनों को अगर आप देखेंगे, ये टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है इनका, कि कहीं पे इनको डर नहीं है, nor do they want to run away. The bizarre statement given by the CM of Rajasthan कि हमने उनको पकड़ लिया, आपने क्या पकड़ा, वो तो भागे ही नहीं कहीं.
they offer themselves. वो तो आपके ऑफिस में चले आते. Have you ever seen somebody committing murder, then recording it and putting it in public domain? So there's no question of police having acted with alacrity and all. नहीं, उन्होंने तो ऑफर किया अपने आप को. So they surrendered. So let's get that very clear. And number 3 is that one most important point कि इस पूरे में रखी हुई है, पहले भी केस हुआ. I'm not getting into the pre-murder issue also, जहाँ पे उन्होंने इन दोनों को कहा कि दोनों साइड आपस में सुलह मशवरा कर दो. Now that is the poor understanding of this entire case, because it's not some ordinary tug of war, कोई animosity है, personal animosity है. No, the killer does not know the victim. कोई जान पहचान नहीं है. It is only the ideology which has forced him to do it. But the third most important point is that once again, it is the neighbor who has helped these murderers. Neighbor, probably, if I'm getting the name right, is Naeem, जिसने पूरा help किया है, detail दी है, whereabouts of the gentleman Kanhaiyalal ji दिए हैं. And now go straight forward to जो हम अभी बात कर रहे थे उमेश कोहली जी की. No, वहां पे the murderer is a friend for 16 years. Imagine कीजिए कि how on earth would he imagine कि मेरा दोस्त 16 साल से मेरा दोस्त है, he'll kill me. I'm saying it is as of today murder. Same as Kashmir, I think then. Now यही देखिए जो आपने कश्मीर फाइल में देखा है. उस टाइम लोगों ने कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं. Now I have my personal example. जहाँ पे my uncle a doctor, my elder brother a doctor, they were, वहाँ पे क्या होता था, it'll take not more than 30 seconds, they would call it a hit list. वो हर हफ्ते निकलता था, उसमें नाम आते थे. They would say कि these are the next targets, calling it a hit list. हैंड रिटन आते थे वो. तो जब किसी ने हमको बताया कि भाई आपके ब्रदर का और आपके अंकल का नाम आया है इस पे, नाउ वी वर टोल्ड कि आपके मोहल्ले वाले ट्रैक रख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं. दे यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आती थी उनको पिक करने, बिकॉज उन दिनों थोड़ा माहौल ज्यादा, आई एम टॉकिंग ऑफ पोस्ट 19th of January 1990. सो एम्बुलेंस पिक करने आती थी दोनों को. बट उनके वायर अबाउट्स का ट्रैक मोहल्ले वाले रखते थे, विद द रिजल्ट की दे वर बोथ होम on 8th of March 1990 when we had to run away. So ये किसने इंफॉर्मेशन दिया आज ये दोनों डॉक्टर घर पे हैं? It was our neighborhood. यही केस आप देख रहे हैं उदयपुर में, यही देख रहे हैं आप अमरावती में. So go to the pattern and don't look at it as a murder. It is an ideology. It's a war unleashed. और पुलिस को सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इवैल्यूएट करना चाहिए that this is not an ordinary murder that we are trying to tackle. And another point is कि ये जो बंदे आए हैं ट्रेन होके, they would have become not a trainees, they are trainers. इन्होंने आगे भी लोगों को ट्रेन किया होगा और ये what I call quote unquote इंस्पायर कर रहे हैं लोगों. देखो हमने किया है, डर की कोई बात नहीं है, this is a holy war. तो आप आ जाइए. So those videos are for that also. You don't, कोई डर नहीं है आंखों में, कोई रिमोर्स नहीं है आंखों में कि हमने क्या किया है. So that is, और यहाँ पे भी देखिए ये जो मिस्टर खान है, ये उनके फ्यूनरल पे गए हैं उमेश कोहली के. So कहीं पे वो डर नहीं है कि मुझे पकड़ा जाएगा या कुछ होगा. No. So they carry it to this extent. So they don't need to be trained murderers or something. So what is driving them to this level is that simple ideology, and that is what we need to track down as police apparatus, as intelligence, या जो भी कहा जाए. From Kashmir, these learnings have to be there. I would suggest normally that there are some people who did some fantastic work, which includes some police officers of Jammu Kashmir Police. तो उनको भी उनकी help ली जा सकती है to see that how do we preempt such attacks so that we don't get too many of them. Even Palwal में भी एक attack हुआ. The only thing is that the guy did not succumb. Otherwise, he is in hospital today. और एक और केस भी आया जो टेम्पल के बाहर उसको मार दिया गया है. So these are continuing. So it's become so very scary कि पैंडेमिक सा सडनली लग रहा है. एक बात तो बहुत बिल्कुल सही बात है कि
कश्मीर फाइल हमने देखी, उसमें पड़ोसी थे। अमरावती में देखी तो वो डॉक्टर साहब थे जो उनके फ्रेंड थे, जो 16 साल से जो डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर मीन्स वेटरनरी डॉक्टर थे और काफी पढ़े लिखे और काफी एक्सपीरियंस वाले थे। एक एक चीज, दूसरी चीज हमने जब वहां पे देखी, वहां पड़ोसी थे उदयपुर में। सो नाउ ये किसी भी लेवल पर हो, ये लोग किसी भी लेवल पर हो, बट थॉट उनकी एक तरफ ही है थोड़ी सी। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मैटर ऑफ कंसर्न है, दैट इफ पीपल आर, और ये सोचने मजबूर कर देता है, मतलब ये हम सोचते नहीं है बट मजबूर कर देता है कि अगर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं और इस तरह से मुखबिरी की जा रही हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना कम पढ़ा लिखा हो, जिनको भी फांसी दी गई थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कश्मीर से जो थे, जिन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो खैर वो कितने पढ़े लिखे हो, बट इनका जो सोचने का तरीका है वो एक ही तरफ है और एक ही जैसा सोचने का तरीका है, और वहां से दिक्कतें पैदा होती हैं समाज में, और ये दिक्कतें पैदा कर रही हैं। इनमें हमें थोड़ा सा अलर्टनेस कह लीजिए या फिर सोचने पे मजबूरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये हमें रखना पड़ेगा। Yeah, two quick points on this. One is that as a society, we have to be extraordinarily careful. एक बार तो याद है आपको भी कि कहते थे आप जहाँ सीट पे बैठे हैं नीचे देखें, ट्रांजिस्टर हो सकता है, कोई डॉल हो सकती है, इट माइट बी अ बॉम्ब, या आपको एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले जाना होता है और जूते भी उतारने होते हैं. These are all precautionary measures that are being taken. Number two is that the challenge to policing and intelligence is absolutely new. और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में 2019 तक एक टाइप का टेररिज्म चला जहाँ पे क्लैशनिकोव्स थे, दे वुड टेक ऑन द आर्मी एंड ऑल, और सिक्योरिटी फोर्सेस, लेट मी पुट इट, तो दे वुड एंगेज विद देम, बैटल होती थी, गन बैटल्स होती थी. लेकिन उसके बाद जब काफी सारे जो पोस्टर बॉय टेररिस्ट वगैरह थे वो एलिमिनेट हो गए, तो एक नए तरीके का टेररिज्म स्टार्ट हुआ वहां पे, जिसको सिंगल शॉट मार के आ जाते थे. नाउ देयर वर नो क्लैशनिकोव्स, नथिंग, पिस्टल्स लेके जाते थे. तो दिस इज व्हाट दे कॉल्ड हाइब्रिड टेररिज्म. और अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में टचवुड अभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, होंगे और फिर भी, बट व्हाट हैपेंड दैट दे रीग्रुप देमसेल्व्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, द इंटेलिजेंस, एंड दे चेंज द लाइन ऑफ अटैक. कि इनको पता चला कि 2019 तक जिस स्टाइल से एलिमिनेट कर रहे हैं, हमको वो लाइन ऑफ अटैक चेंज करनी पड़ेगी. So now what they have done is, whatever they are doing, let's not talk too much about that, but they have involved the local people. They have put their moles out there to get information from the locals about the whereabouts of these young hybrid terrorists. और इनकी शेल्फ लाइफ 1 महीने 2 महीने आ गई है. So I am taking this example कि यहाँ पे भी पुलिस और इंटेलिजेंस को, they would have to face this challenge in a different way. This is not ordinary policing. इसमें मुझे लगता है कि JNK के लोगों ने काफी काम किया है. Some of the officers who have worked there, be it the army officers, CRPF के, or even local police, there's some fantastic work there. So it would be wonderful to see that they have some workshop in Delhi with these police officers, so that they can tell them how exactly to recalibrate their strategy against this new challenge that is put there in the open. Thank you, sir. Amit ji, over to you. जी, सॉरी मेरा कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया था यहाँ पे, देयर वाज अ पावर आउटेज. काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है और डेफिनेटली काफ़ी मतलब इसमें दर्दनाक घटनाएं हैं. आगे आने वाले समय में अनमोल सर, अगर आप कुछ बता दें कि किस तरह के सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्योंकि आप इनर सर्कल्स में भी, आई मीन यू हैव दोज इनपुट्स रहते हैं आपके पास, तो what all challenges are we looking at going further from here, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं. और जैसे जैसे हमने, क्योंकि हमारे साथ विष्णु जी भी आए थे, विष्णु भाई भी आए थे, विष्णु जैन, शंकर जैन जी, वो भी लगे हुए हैं, और ये आगे भी बढ़ेगा ज्ञानवापी का और इस तरह की घटनाएं. तो कैसे देख रहे हैं इसको? एक
ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, विल टेक दैट एंड देन आई थिंक उसके बाद हम क्लोज करेंगे जी। नहीं, अभी रैना जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। इट्स अ परपेचुअल वॉर सिचुएशन। ये आइसोलेटेड कोई इंसिडेंट क्राइम का नहीं है। बट व्हाट रैना सर वाज सेइंग विथ रिगार्ड टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, सो उनका हाथ थोड़ा बंधा हुआ है। दे हैव लिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरी अदर थिंग। दैट्स व्हाई आपने गौर किया होगा द मोमेंट इंसिडेंट हुआ, राइटली मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एनआईए एंगल पे इसको हैंड ओवर किया, बिकॉज इट्स नॉट अ आइसोलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कि कोई हेट या हेस्ट ऑफ द मोमेंट में सम क्रिमिनल पर्सन केम एंड जस्ट किल हिम, बट ये एक टेररिस्ट एक्टिविटीज था एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनआईए, या आप बोलिएगा तो यूएपीए एक्ट है, जिसमें आपको कैटेगरिकली वो टेररिस्ट एक्टिविटी से डील करने के लिए है। दैट्स व्हाई दे हैव राइटली कैटेगराइज इट बाय सो। पहले यूएपीए में ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना या उनके अगेंस्ट एक्शंस होता था। नाउ अमेंडमेंट्स बीन ब्रॉट एंड राइटली ड्यूरिंग दिस रेजिम ओनली कि इसमें इंडिविजुअल्स को भी बुक करना होगा। दैट इज हाउ थिंग्स टू बी टैकल्ड। बात आई कि कोई भी है, पड़ोसी है, उसका मित्र था, सो बोलना ये गलत नहीं होगा एंड इट इज फॉर देम। जैसे कि आरिफ साहब ने कैटेगरिकली उसको हाईलाइट किया, द बर्डन इज ऑन दैट कम्युनिटी ओनली कि उन्हें क्लीन आना होगा। देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट और ये कांस्टेंट और बढ़ेगा। दे आर ऑन लूजिंग एंड। बस हाईलाइट सही न्यूज होना जरूरी है कि हाउ फिल्दी द प्रीचिंग इज। सो एवरी पर्सन, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, लॉयर हो, कोई भी हो, इफ दे आर प्रीचिंग विदाउट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट extremism is quite much deep rooted in that preaching, तब तक each and every one are potential terrorist, because उनको चाहिए क्या, they are weapon in themselves। अब ideological war ये कोई ideology का नहीं है, it's an agenda and it's a sanction giving in their preaching कि you have to do these activities। वो चाहे गजवाए हिंद का प्रिंसिपल हो, वो चाहे आपको बाकी अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को फैलाने के लिए अलग अलग उनका वो जो टर्म डिफाइन है इनके डिफरेंट सैंक्शन कोड्स में, कि जहाँ पे सैंक्शन हो, जहाँ पे ऑलरेडी इस्लाम एक्टिव है वो शांत हो जाएगा लैंड, जहाँ नहीं है वहाँ दे कैन परपेट्रेट थ्रू डिफरेंट मीन्स। So now, with the technology, with the education, with every other thing mixed with that kind of filthy preaching, that is all the more dangerous। So ये चीज हटा दीजिए कि पढ़ाई लिखाई has और education has to do with it कि वो इसको खत्म कर सकता है, नहीं, वो नहीं होगा जब तक ये heavy editing इसमें required है और आरिफ मोहम्मद जैसे लोग चाहिए जो आके आगे सामने ये बोलें। अदरवाइज ट्रस्ट डेफिसिट कांस्टेंट रहेगा। जहां तक बात आई नेशनल सिक्योरिटी और बाकी ये, तो आप यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन हियर एंड ईच वन ऑफ देम इज पोटेंशियल डेंजरस। आपको नेम शेम करना होगा टू कैटेगराइज इट। आप उसको ये कह के नहीं बोल सकते हैं कि एवरी रिलीजन प्रीचेस पीस। आपको देखना होगा कि हर लंप जो होता है वो कैंसरस कोई होता है, कोई नहीं होता है। तो डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। यू कांट गिव एन अम्बिलिकल कॉर्ड टू देम थ्रू इंटेलेक्चुअल बैकिंग टू देम, कि वो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो बढ़ावा मिलता है कि जैसे ही एक्टिविटीज हुई बाकी लोग आ जाएंगे। प्लेथोरा और क्लस्टर ऑफ बीट एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउसेज हो, कोई इनोसेंट बोल देगा, कोई उनको। सो टर्मिनोलॉजी पे ये खेलते हैं। जैसे आप और हम ही देख लीजिए, जो ट्रांसमिट हुआ कोर्ट में हम लोग कुछ और लेके चल रहे हैं, एक्टिविटीज कुछ ट्रांसमिट होता है, न्यूज मीडिया जो बोलती है हम अपना नोशन फॉर्म कर लेते हैं उस पर। सो दैट इज क्वाइट मच डेंजरस थिंग इन माई व्यू। वहां भी सेंसरशिप और लाइबिलिटी ऑफ अ मीडिया इज मच मोर रिक्वायर्ड, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अंदर आना होगा, या रीजन बीइंग दो दे आर टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी लेजिस्लेशन वर्क कर रहा होगा। एंड दैट इज हाउ ये एएलटी न्यूज एंड एवरी अदर थिंग नाउ बीइंग बुक्ड राइटली सो, बिकॉज दे गिव द पोडियम टू दैट कि वो उसको और लोगों तक फैलाते हैं। एंड टू ग्लोरीफाई, विच रैना सर वाज राइटली सेइंग, he was glorifying, he was aware of that he is going to get caught। so it is like कि नहीं, वो sanction code है, what you are doing is just, it's a declared war। बस वॉर का मीडियम अलग है, वेपन नहीं है हाथ में, तो जो जहां मिले आप वो करते जाइए।
That is how the scenario is. जी सर, तो आई थिंक अगर आपके राजेंद्र सर कोई फाइनल कमेंट्स हैं या विवेक जी, अनमोल जी, बिकॉज आई थिंक आप जाना भी, हमारे पास थोड़ा सा ओवरड्यू हो गया है, बट एक चीज कहना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से कि जी, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि वी आर, आई मीन कई लोग काफी नाराज हैं, सरकार से भी नाराज हैं, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, दे आर नॉट रिएक्टिव, आई डोंट थिंक दे आर रिएक्टिव। हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, बट वॉट एवर वी आर सीइंग हैपनिंग इज काइंड ऑफ अ रिएक्शन ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स हैपनिंग, चाहे वो आप जो केसेस चल रहे हैं नेशनल हेराल्ड के करिए, या और भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं तीस्ता से तलवाड़ और ये सब। सो आई मीन डेफिनेटली दैट इज, वी कैन से द प्रोएक्टिव मेजर, एंड दिस इज अ रिएक्शन टू दैट। आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस विल बी टैकल्ड एज वेल। जी राजेंद्र सर। Just 10 seconds ka कि that people should very clearly see, and let us make it very boldly clear here, the people who are unhappy with the present government, they should see that the previous dispensation in Maharashtra, उन्होंने ये उमेश जी का केस टोटली दबा दिया था. And the moment this government takes over, NIA is pressed into action. Should the state government not have done it? Was he a BJP person? So ऐसी जो फेडरल स्ट्रक्चर का अब्यूज हो रहा है, आई थिंक वी नीड टू कॉल दैट आउट, और ये भी बोलना चाहिए हमको कि इमीडिएटली एनआईए हैज बीन प्रेस आउट. क्या होगा कि एनआईए माइट से कि इट्स नॉट अ केस ऑफ टेरर और व्हाटएवर, बट वी नीड टू err on the right side because the case is very serious. So that's what I thought, that we should see that what the federal structure is doing and what the opposition parties are doing. और जैसा अमित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कई सारी चीजें हैं जिसके ये repercussions हैं, and the way this government has to find balance globally, nationally, वो जो 2.5 enemies हम कहते हैं, there's so many of them, and I would say that the government is doing a nice fine balance, keeping so many things in it. Thank you. जी, तो इसके साथ समाप्त करते हैं विवेक भाई। थैंक यू सो मच अनमोल जी, राजेंद्र जी और सभी हमारे व्यूअर्स को। एक छोटी सी अपील है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल नीचे दिए हुए लिंक्स में, और आपकी स्क्रीन पे हमारा स्पेस का लिंक भी है, जो ट्विटर पे हम एवरी नाइट वी डू स्पेसेस एट 9:30 PM, तो प्लीज़ उस पर भी जुड़िए। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे आते हैं, और एक अच्छी डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हम करने की कोशिश करते हैं उसमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्ते।